Hello everyone, a very good afternoon to all of you. Welcome to BYJU'S Exam Prep and I'm Roohindeep Kaur and in today's session we're going to go about what should be your last 7 days strategy. मैम बट एग्जाम तो 13th of March को है तो आप लास्ट 7 days क्यों बोल रहे हो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट इन अ मोमेंट बट आई रियली बिलीव दैट इफ यू आर गोइंग फॉर CUET Christ University entrance test on 13th of March, this is the video for you. You should be listening to this because there are sometimes some bitter truth that you do not tell yourself and something that you're afraid of knowing, right? So I'll be telling you those things. Hi Sakshi, hello Nitisha, hello Safna, hello Nancy. Good afternoon, guys. So nice to see you guys here. So I hope you guys are ready. And the moment I start the session, before I start explaining what should be the strategy, what are the things that should be taken care of, I hope all of you are done with the basics, right? So when I say basics, I am assuming that you are a student who knows the syllabus, who knows the basics of the syllabus, and right now you are just in the revision phase. If you are a student who is not in the revision phase, then we're going to discuss that as well. Before that, a little information about our champions course CUCET 2022. So if you're a student who's preparing for CUCET as well, right, we're giving you live classes, mock tests, sectional tests, and practice question to prepare for that. For any reason, if you want to take a free trial, you feel free to do that. You can contact on the number given below. Any query will be entertained on the numbers if you speak to our counselors, and you can also email us. And if you want to know any more details, you can also go down to the description box, right? And this is our BBA rankers course for the students preparing for NARCI, Symbiosis, Indraprasth, Christ, and St. Xavier's. ठीक है, and IPMAT and DUJAT is the course for the students preparing for IPMAT and DUJAT. CUET is not the best of the three, right? Ashish, it is. In fact, if you're going to say that, okay, I'm going to appear for the March test as well, April test as well, and May test as well, so they are going to consider the best of the scores. That is something which was mentioned in the notification as well. So we need to understand the few crucial things about CUET that is going to be held multiple times. So the first one for you is going to happen on 13th of March. The second one is going to happen on 5th of April, I believe 5th or 3rd, I'm not sure. Please check this out. I'm sure 3rd of April is the date. Okay. Then it is 8th of May. So these are the three dates, right? And for 13th March wala jo test hai, you are allowed to fill in the form till 3rd of March. That means if you still haven't filled the form, you still have 2 days left, right? So multiple times of the year, fine. It is slightly different because it has more sections, right? Student needs to pay attention to a specific type, which is fundamental accounting section. ठीक है, other entrance exams में नहीं है, and these are the few things which are different in CUET. And right now, why? Acha, I started with saying that okay, this is your last 7 days strategy, which clearly you have 12 days, right? So it is 5 plus 7 days. So why am I telling you the last 7 days of your strategy? So that you're utilizing these 5 days to focus on your weak areas. And that is something which is very, 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 very crucial, because if you do not understand that, okay, I might be someone जिसने fundamental accounting को हाथ भी नहीं लगाया, please go ahead and do that, right? How to do that? I'll be discussing that as well. Good afternoon, Ritika. Good afternoon, right? So these are the few things that you need to understand, that I'm giving you last 7 days strategy, but to apply that strategy, आपके पास 5 extra days भी है. Okay, so that is something which is very important, and right now is the right time to revise and relearn the things, because believe it or not, you have forgotten few of the vocabulary words, you have forgotten few formulas of quantitative aptitude, you have not revised fundamental accounting for some reason. Some of you might have done that, and some of you are like very happy with your preparation. So right now is the time, if you are done with your preparation, to revise it
If you are weak in something, you have to relearn it. Okay, so this is the right time. uh, Sanika, to be very honest, critical reasoning के लिए for the BB entrance exam, it is not a very high level, questions in Arihant or for that matter in RS Agarwal. So if you want to get good questions on critical reasoning, I would want you to go on internet and type specific, like you want to go and type specifically that I want statement assumption questions, I want statement argument questions, and then find the questions. One. The second thing that you can do is you can refer to law entrance exam books, because वहां पे जो critical reasoning आता है that is of higher level. ठीक है, or you can refer to GMAT or CAT level critical reasoning if you want to get a good level of critical reasoning, right? Because the other entrance exams, they do not ask you very high level critical reasoning questions, and as far as CUET is concerned, बहुत ज्यादा high level नहीं आएगा, they will be direct questions. Okay, I hope that answers your query. And in the slides to come, we're going to discuss what should be the last 7 day strategy. But before that, guys, one very important thing, identify your distractions. In these 5 days, okay, today should be the first day. 1st of March is there, and you should be identifying the distraction. And that distraction could be you calling your friend and talking endlessly, you watching Netflix, Prime, or whatever OTT platforms, right? Um, or if you could be someone who is just constantly on their phone watching YouTube, you wanted to watch something productive but ended up listening to music or doing something which was not important. So identify your distraction today and wow करो, ठीक है, खुद के साथ take a vow that you are not going to get distracted. So for the next few days to come till your entrance exam is there, please make sure that you're not distracted, because these few days, whether it is your board exams, whether it is your entrance test, the distractions are the primary reason that is going to screen you out from the students who are going to get into the dream colleges, right? So those students who are going to do wonders, who are going to get good ranks, who are going to attempt nicely with speed, with accuracy, they do not have distractions. So that is the first thing you need to eliminate. And the second thing that you need to know is what you have not attempted yet. So I'm going to give you last 7 day strategy, but in this 5 days, the things that you haven't prepared, like you could be someone who would be like, okay, data interpretation is not very difficult. I'm very good at solving questions of pie chart, bar graph, linear graph. If you haven't prepared for it, make sure you're doing that. Okay? So your basics, everything should be in order. You should have your questions in handy. You should have good mocks. You should have good sectional tests. You should have questions that were not solved in the first time, and now you're going to be working on them. So this is the one thing that you're going to do in your next 5 days. Okay, no distractions, avoiding distractions at each and every cost. The second thing is understanding what is the syllabus. If you have the syllabus all right, so keep the things in order. You have a plan to fulfill, you have a plan that you need to get conducted, right? So number of sections are 6 in Christ University entrance test. There are 120 questions. They're going to be multiple choice, 120 marks. You get 2 hours. The language is English. You have 4 choices, out of which 1 is correct. Mode of examination is online, and hence you should be taking your mock tests online, and negative marking is there. So why did I say take your mock test online? Because many of you are just going through the question papers in certain books, and you're not attempting them online. So you should need to understand that the speed while you take a look at the question from the book and solve is different, and while you look at the screen and solve that question is different. So these are two different things. So make sure you're doing that as well. Now the sections, if they're going to ask you 10 questions. Now, please think about it logically. If they're going to ask you 10 questions from fundamental accounting, what can they ask? They are going to ask you the basics of fundamental accounting. Ma'am, कहाँ से solve करना चाहिए? कहाँ से study करना चाहिए? Do nothing.
ठीक है. That internet which might be the distraction for you serves you best. You can simply take a look at the accounting, ठीक है, as a subject of class 11th and 12th. Take a look at the index. Whatever chapters are there, go through the basic definitions. Make sure you do that. Is that enough? Yes. Assuming, I'm just assuming, ठीक है, I'm not a commerce student. Assuming 11th class had 15 chapters, 12th class had 15 chapters. So in each and every chapter, you're going to get around 4 basic definitions. ठीक है. So 15 into 4 is 60. 15 into 4 is 60. So basic requirement, you have 120 definitions. ठीक है. आउट ऑफ दोज 120 डेफिनेशंस क्या 10 क्वेश्चंस आ जाएंगे? 10 के 10 नहीं आएंगे तो भाई 7-8 तो आ जाएंगे. 7-8 नहीं आएंगे तो यू विल बी गोइंग थ्रू, that is 0.25. That is 0.25. So plus 1 for accurate answer and minus 0.25 for the negative answer. Okay. So this is the information. So language, English, comprehension and verbal reasoning, your vocabulary. By this time you guys have had your vocabulary accumulated. ठीक है. You could be a student who started back in January. 2 महीने हो गए हैं, आपके पास कुछ ना कुछ वर्ड्स होंगे. अगर मैं 10 वर्ड्स पर डे के हिसाब से भी देखूं या 5 वर्ड्स पर डे के हिसाब से भी देखूं, तो you have around 300 to 600 vocabulary words. So make sure you are revising them. Is it going to help that you're going to learn new words each and every day? Not exactly. So make sure you're revising them, synonym and antonym point of view as well. Reading comprehension skills, that is very important. Reading comprehension अगर एग्जाम में आएगा तो या तो 5 का सेट आएगा या 10 का सेट आएगा. ठीक है. हैप्पी, मुझे मुझे खुद याद नहीं था. हैप्पी महाशिवरात्रि बच्चा. मे गॉड ब्लेस यू, मे लॉर्ड शिवा टेक ऑल योर वरीज अवे. या सीरियसली हम एग्जाम के स्ट्रेस में हम लोग विश नहीं कर पाते हैं. हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू गाइज. सो आरसी सॉल्व करना मस्ट है, जर्नल नॉलेज, करंट अफेयर्स. सो in the next 5 days guys, in the next 5 days what you could be doing, you have 12 months, like आप अप्रैल 2021 से लेके मार्च 2022 तक के करंट अफेयर्स आपके पास होने वाले हैं. सो इन द नेक्स्ट 5 डेज, ठीक है, द फर्स्ट 4 डेज को आप क्वार्टर्स में क्या कर लो, डिवाइड कर लो. ओके, माय फर्स्ट डे आई एम गोइंग टू गिव लाइक 2 hours to my current affairs from April to June, July, right? And then the next 3 months, and then the next 3 months, and you are going to take a look at the important ones for the initial 6 months and then thoda sa thoroughly in the latest 6 months. So that is something which is expected out of you. Quantitative aptitude के formulas आपके पास handy होने चाहिए. Numerical ability, squares, cubes, whatever is important, please उनको दोबारा से revise करो. Fundamental mathematical operations, your basic questions directly asked on fundamental mathematical operations should be done. ठीक है. तो अभी मैंने 7 days का strategy शुरू भी नहीं करा. I'm still giving you work for the first 5 days, right? Reasoning, you should be able to recognize what are your weak points. You could be a student who does not understand blood relation at all. Try to solve as many questions in the first day. Dedicate 2 hours. ठीक है, or 1 hour to be very honest. ठीक है, and try to solve minimum 20-30 questions. And if you have attempted like 20-30 questions, you can give like 10 to 15 minutes more to the questions in those 30 questions जो आपसे solve नहीं हुए in the first go. ठीक है, you could be attempting like 30 questions or 40 questions. ठीक है मैम, मेरा 1 hour चला गया, but let us just dedicate 10 to 15 minutes more towards the question that were not done in the first place. Ashish, simple logic, a very simple logic. If you are going to give a test, if you're going to give a test in March, April and May, there will be students who will be just going for March, just going for April, just going for May as well. ठीक है, so it is not like, अच्छा, so Christ University is not like they just are going to give you a seat. So you can secure a seat, you can pay the fees. This is what a private university does.
मार्च में लेट अस से उन्होंने 50% सीट्स जो है वो फिल कर दिया, बिकॉज एंट्रेंस टेस्ट इज व्हाट, दैट इज योर फर्स्ट स्क्रीनिंग राउंड, एंड आफ्टर लाइक 13 के बाद 15 to 19 you're going to give your micro presentation and your personal interview, that is also going to happen. So they are going to choose a certain amount of students who fit in. ठीक है, they're going to give them a choice that okay, you might want to come and take this seat, but at the same time they give a time period to these students. They're like, okay, you might want to fill in this particular seat by giving us fees, and a lot many choose not to. Why? Because they're also preparing for separate universities. Okay, so is it very important right now that why are they doing it? To be very honest, you know the reason. Everyone knows the reason why Christ is the first one to conduct the entrance test, because they want the students who are not confident enough. Because Christ ka jo test hai, honestly, we all know it is easier than so many BB entrance exams. It is easily if you have a good strategy, if you know how to apply that strategy, you'll be able to crack it. But at the same time, you are a good student, you can apply this strategy, you'll be good enough to get a seat in a separate college, but you're not confident enough. And Christ says, okay, it's perfectly fine. If you want to take a chance, please come and reserve a seat over here. ठीक है, so they are kind of asking you कि okay, we are offering you this, take it or leave it. So that is the whole point. ठीक है, but it is not important कि ये क्यों कर रहे हैं, वो बहुत लंबा डिबेट है, बहुत लंबा डिबेट है. And why should we get into it? Is Christ a good college? Yes. Are they giving you a good course? Yes. Are they offering you something सबसे पहले? Yes. बाकी कॉलेजेस कर लेना, वो बोल रहे हैं कि हम कर रहे हैं भाई. ठीक है, okay, so day one strategy would be for QA and DI, revise all your formulas. Now, in these 5 days, you have all your formulas handy, okay, and you're going to revise the formulas. Hardly takes like 30 minutes. If you have done and dusted with the formulas in the initial 5 days, okay, hardly takes 30 minutes, 40 minutes at max, and do relevant questions. Because if you are keeping your formulas handy, if you are understanding your weaknesses, right, you will be solving the questions which are relevant to your weaker topics. And I always say weaker topics because कल कल परसों ही हमने विजुअल रीजनिंग करा था. आई बिलीव yesterday we did visual reasoning, and each one of you out of 10 question you gave like 8 9 10 answers accurately. And I said, just because you love doing this question, that doesn't mean आप इसी की practice करते रहोगे. So that is important over here. Just because the arithmetic formulas constitute of ratios, percentages, simple interest, compound interest, a simple direct formula based question, and you know how to solve them, please do not keep on solving them. Try to solve the questions that you find difficult. Okay, revise all the words and idioms that you have done and learned so far for verbal ability. So words, idioms that you have in handy, you're going to revise them. So there are various ways on how to I'm going to assume that you're giving 1 hour to revise the formulas and do certain questions. You're going to give 1 hour to all this, okay, all the words and idioms. But ma'am, 1 hour, and assuming I have 500 words with me, how am I going to do that? Okay, so the first thing would be, in these 5 days, try to, if you have like 500 words, 100 words a day, try to revise them. Make sure you do that. Okay, you can ask someone to ask you the meaning of certain words or idioms. You could use them in sentence, or on the first day, what you can do, you can ask someone ki, okay, please ask me 20 words. Okay, and for the 20 words, I believe for the 20 questions that you have, you need around 20 minutes, and then random words 20 और उठाओ, फिर 20 और उठाओ. Now do not worry about you forgetting the words. ठीक है, just worry about, okay, consider that this is your test. सीए कैसे करे, करंट अफेयर्स ना नैन्सी, तो पहले तो 7 days बोला ना आपने. पहले तो मैंने तुम्हें 5 days का इंफॉर्मेशन दिया है कि तुम उसको वो 5 days जो भी है हमारे 2 3 4 5, ठीक है, लास्ट 7 days से पहले वाले जो 5 days है. So
On those days, I am expecting you to, get them sorted quarterly. Like up April, May, June, 21, 1 डे के अंदर इनको रिवाइज करो. ठीक है, अपने आप को 1 या 2 आवर्स दो, 1 या 2 आवर्स दो. ठीक है, आज ही करो. दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू टुडे. अप्रैल मई जून, अप्रैल में जितना डेज है, आई थिंक आपको हार्डली कितने न्यूज मिलेंगे, 30 to 40 इंपॉर्टेंट न्यूज. ठीक है, 30 to 40 इंपॉर्टेंट, क्योंकि तब उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, अब शायद नहीं है. ठीक है, देन टेक इसका वाला. तो in 1 or 2 hours what are you doing? You're doing around 120 questions at max. ठीक है, तो कल एक और चीज करो. सो इन द नेक्स्ट 4 days आप पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स रिवाइज कर रहे हो. अब मैम 1 साल का करंट अफेयर्स आप मुझे रिवाइज करने को बोल रहे हो नेक्स्ट 4 days. आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. डू यू हैव अ चॉइस? If you did not go through these current affairs questions, if you did not learn your current affairs in the past 1 year, this is something that you have. And I've seen students going through these questions. You might not remember each and every fact. You might not remember each and every news. But trust me, when you're going to give the mock tests based on that, you are going to automatically kind of, now this is something which is unexplainable, but your subconscious remembers the facts and आप options eliminate करके correct answer निकाल सकते. ठीक है, so that is one very big thing. and मैंने जितने भी toppers को interview करा है, मेरे जितने भी students जिन्होंने crack करा है, and I have seen them doing the same thing. This is the strategy they वर्क ऑन. सबसे पहला स्ट्रैटेजी तो उनका ये होता है कि दे डू नॉट मिस आउट ऑन करंट अफेयर्स, तो वो वीकली अपने करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं. नाउ इफ यू आर अ स्टूडेंट जिसने वो मिस कर दिया राइट नाउ, अभी नेक्स्ट 5 days में, अगर आपको क्या लग रहा है नांसी दैट मैम अगले 4 days में 1 year इंपॉर्टेंट, तो 5 days में कर लो, 6 में कर लो, करना तो पड़ेगा. ठीक है, दैट इज समथिंग वी हैव टू डू. इन द नेक्स्ट 6 days यू कुड डू 2 months, अप्रैल में कर लिया, जून जुलाई कर लिया, लाइक दैट. ठीक है, सो वो चीज करो. फॉर जर्नल अवेयरनेस एंड स्टैटिक जीके, दिस इज डे 1. ये जो लास्ट वीक है, ये लास्ट वीक है. ओके, दीज 5 days आर नॉट इंक्लूडेड. आई एम अज्यूमिंग इन दीज 5 days यू हैव योर notes and static GK, everything sorted out, right? And now you're going to focus on static GK first day. Do not focus on your current affairs now, and revise all your notes. Science utha lo, geography utha lo, civics utha lo, so revise them. Hi Prabhakar, hello, right? And then this is how you go about it. So first day strategy is आपका static GK खत्म होना चाहिए. Second day strategy is practice questions from analytical reasoning. Now 1 hour, 1 hour, 1 hour from all this, you might want to give like 2 hours to this. ठीक है, 2 hours दे दो इस पर्टिकुलर उसको. क्यों? क्योंकि आपके पास एक दिन मेजॉरिटी एक सब्जेक्ट को देना जरूरी है. तो फर्स्ट डे एलआर को दे दो, बिकॉज एलआर इज रिलेटिवली कि आपने आज फर्स्ट डे में इसके बारे में प्रिपेयर कर लिया, आपको नेक्स्ट 6 days तक बहुत ज्यादा रिविजन की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो गिव योर फर्स्ट डे एज अ प्रेफरेंस टू एनालिटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग, सो दैट यू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ इट. मैम इंटरव्यू, नहीं 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 नैन्सी, 13th of March को देयर इज योर एंट्रेंस टेस्ट एंड योर इंटरव्यू. इफ यू क्लियर योर एंट्रेंस टेस्ट, योर इंटरव्यू विल बी, आपको कॉल करा जाएगा फॉर योर माइक्रो प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू. दैट इज कंडक्टेड फ्रॉम 15 to 19th, 15 to 19th of March. ठीक है, और इसी मंथ के एंड में तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा कि तुम क्लियर कर पाए या नहीं कर पाए, क्या तुम्हें सीट ऑफर होगी या नहीं होगी. ठीक है, एंड आपका फर्स्ट डे का स्ट्रैटेजी क्या है? आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज क्यूए के क्या करने हैं, रिवाइज करने हैं, और जो वीक टॉपिक्स हैं, द वीकर टॉपिक्स, यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस. फॉर वर्बल एबिलिटी, whatever words you have learned till now, do not learn new words. ठीक है, revise them. I gave you a way of revision, क्योंकि 2020 random words उठाओ and try to solve them. That is one way. And some students are like, ma'am, I don't do it this way. I go by, okay, मैं सुबह उठा, मैंने 50 words learn करे, फिर मैंने दोपहर में दोबारा 50 words और revise करे, ठीक है, and then 50 word दोबारा से revise करे. So 150, 150, whatever method helps you. ठीक है, जर्नल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स में जर्नल अवेयरनेस को फोकस करो, स्टैटिक जीके को गो टॉपिक वाइज. डू नॉट जस्ट मेक अ
खिचड़ी out of each and everything. Go to science, then go to your बायोलॉजी, ठीक है, आपका कोविड रिलेटेड न्यूज, स्टैटिक जीके वगैरह का, देन गो टू योर ज्योग्राफी, योर सिविक्स, और ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। एंड देन एलआर को थोड़ा मेजोरिटी दे दो फर्स्ट डे में, क्योंकि एक टॉपिक को अगर आप ज्यादा मेजोरिटी दे रहे हो एक दिन में, दैट मीन्स यू आर कवरिंग मोस्ट क्वेश्चंस आउट ऑफ इट। देन टेक वन मॉक टेस्ट, दैट क्लियरली मीन्स 2 hours। एक मॉक टेस्ट 2 hours, और देखो कि तुम्हारा स्पीड कितना है। स्पीड मतलब तुम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। तो फोकस करो स्पीड के ऊपर, ठीक है। यू कुड बी लीविंग द क्वेश्चंस जो आपको नहीं आते हैं, क्विकली ट्राइंग टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, जिससे आपके ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज हो सके, जितनी क्विकली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज योर फर्स्ट डे का स्ट्रैटेजी। योर सेकंड डे स्ट्रैटेजी इज, फर्स्ट डे हमने क्या करे थे, फॉर्मूलाज करे थे। सेकंड इज ब्रश अप योर अलजेब्रा एंड डू हाई लेवल प्रॉब्लम्स ऑन द सेम टॉपिक, whatever topic you come across, ठीक है। पिक वन टॉपिक, ठीक है, लेट्स से प्रॉफिट एंड लॉस, डू हाई लेवल प्रॉब्लम्स ऑन दैट, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, हाई लेवल प्रॉब्लम्स करो, मुश्किल वाले प्रॉब्लम्स करो। तो इस तरह से टॉपिक्स उठाओ एंड करते जाओ। मैम टाइम लिमिट क्या, 2 hours फॉर 120 क्वेश्चंस, 120 minutes फॉर 120 क्वेश्चंस, 2 hours बच्चा, 2 hours, Nancy, ठीक है। So revise all the important grammar rules learned so far, nouns, pronouns, whatever you have hardly takes like 30 to 40 minutes. तो वर्बल इस दिन हम थोड़ा लाइट रख रहे हैं। जर्नल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, focus on current affairs and pay special attention to whatever you can learn about Ukraine and Russia battle। अगर आप उस दिन नहीं करना चाहते तो प्लीज अभी ये 5 दिनों में इसको कवर कर लो, ठीक है। फोकस ऑन बेसिक अकाउंटिंग, ठीक है। तो जैसे आपने एलआर को बहुत ज्यादा टाइम दिया था, सेकेंड डे आप अपनी फंडामेंटल अकाउंटिंग को ज्यादा टाइम दे सकते हो। एंड अगेन यू आर गोइंग टू गिव अ मॉक टेस्ट, बट सिर्फ एक्यूरेसी, कि तुम अगर सिर्फ सही सही क्वेश्चंस कर रहे हो, ठीक है, कि तुम्हारी एक्यूरेसी मतलब तुम 120 क्वेश्चंस में अगर तुम 70 भी अटेम्प्ट करते हो तो 70 के 70 सही होने चाहिए, ठीक है। इन द फर्स्ट डे यू गोइंग टू बी लाइक 120 minutes, माय एम इज अराउंड अटेम्प्टिंग 110 क्वेश्चंस एंड थिंग्स लाइक दैट। तो फर्स्ट फोकस मॉक टेस्ट का डे 1 में था स्पीड, सेकेंड डे इज एक्यूरेसी। डे थर्ड में आप थोड़े और हाई लेवल पे चले जाओ, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। एंड इस प्रीवियस मॉक्स, आपके पास क्राइस्ट के प्रीवियस मॉक्स अवेलेबल हैं बायजूस के ऊपर, यू कैन गो एंड रिसर्च ऑन देम, ठीक है, और वहां से क्वेश्चंस उठाओ एंड प्रैक्टिस देम। वर्बल एबिलिटी हमने कल डे 2 में थोड़ा सा लाइट रखा था। यहाँ पे आपको क्या करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ठीक है, जो है वो सॉल्व करो। ट्राई करो कि 4-5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप आराम से सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। एंड वट एवर थिंग्स यू आर गेटिंग रॉन्ग, लाइक आपका आंसर क्यों गलत है, so focus on those things, focus on your reading speed. फंडामेंटल अकाउंटिंग के लिए लर्न इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज इन अकाउंटिंग, वट एवर यू हैव डन यस्टरडे उसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। एलआर के लिए आप इस दिन क्रिटिकल पढ़ो। सो आई एम कीपिंग दिस लाइट एंड दिस लाइट। तो व्हाट एम आई डूइंग, बेसिकली आई एम गिविंग यू अ स्ट्रैटेजी। देखो यहाँ पे मैंने एलआर को थोड़ा सा वेटेज दिया फर्स्ट डे, सेकेंड डे मैंने आपके फोकस करा फंडामेंटल अकाउंटिंग एंड जर्नल अवेयरनेस को, ठीक है, करंट अफेयर्स को। एंड देन यहाँ पे मैंने फोकस करा है आपके वर्बल एबिलिटी को और थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चंस ऑफ क्यूए को। सो आई एम डूइंग व्हाट, एक दिन में कुछ चीजों को एक्स्ट्रा वेटेज दे रही हूं मैं। देन क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको बस क्या करना है, प्रैक्टिस, ठीक है। अगर आपके पास सेक्शनल टेस्ट अवेलेबल हैं, प्लीज मेक श्योर यू डूइंग दैट। वर्बल एबिलिटी पे आपको स्मार्ट गेसेस कर रहे हैं। स्मार्ट गेसेस मतलब प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस के बेसिस पे कि ओके दिस वर्ड कुड मीन लाइक दैट, ठीक है। सो वो सारी की सारी चीजें उसके ऊपर फोकस करो। ट्राई टू गो अबाउट द वर्ड्स जो जैसे प्रीफिक्सेस से बनते हैं, सफिक्सेस से बनते हैं, उसके अलावा कि यू हैव सर्टेन क्वेश्चंस जहां पे आप गेसेस कर सकते हो। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठाओ, चाहे क्राइस्ट के, चाहे सिम्बियोसिस के, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, व्हाटएवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर देयर, ट्राई टू फोकस ऑन देम। जर्नल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के लिए लर्न एंड रीलर्न एवरीथिंग। इट इज जस्ट गोइंग टू बी डे 4 के बाद आई एम गोइंग टू आस्क यू टू रिपीट एंड रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग।
नैन्सी, मैंने इनिशियली यही चीज बताया है बेटा कि आपका फंडामेंटल अकाउंटिंग के लिए आपके पास बुक्स नहीं है। इमेजिन तुम्हारे पास बुक्स ही नहीं है। तुम 11th एंड 12th का एनसीईआरटी जो है ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है। पहले तो बेटा आप इनके इंडेक्स ओपन करो, दोनों के 11th एंड 12th के इंडेक्स के ऊपर आपको कम से कम 30 या 40 क्या मिल जाएंगी, टर्मिनोलॉजीज। उनके ऊपर फोकस करो एंड देन थोड़ा बहुत गूगल रिसर्च करो उसके ऊपर। दैट इज द मेजर थिंग दैट यू कैन डू। अभी भी 10 दिन है, अभी भी 10 दिन है। अगर आपके इंडेक्स में 30 चैप्टर भी हैं और आप एक दिन में 3 या 4 चैप्टर्स की टर्मिनोलॉजीज भी लर्न कर रहे हो, ठीक है, तो यू आर गोइंग टू डू वंडर। 10 ही क्वेश्चंस आएंगे एंड बेसिक एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। एंड यू कैन फोकस ऑन दिस, ठीक है। एलआर के लिए आपको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग या फिर आप मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस को भी क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। आज भी आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लेना है डे 4 में। आपको स्पीड भी देखना है, स्ट्रैटेजी। देखो आपने डे 1 में क्या लिया, स्पीड के ऊपर फोकस करा। सेकेंड में आपने एक्यूरेसी के ऊपर फोकस करा। थर्ड में आपने एनालाइज करा कि क्या फायदा था उस चीज का, ठीक है। And afterwards, what are you going to do? You are going to take one more mock test and focus on both speed and accuracy. Now you have to try to understand and make the balance out of it, right? And day 5 में what are you going to do? Data interpretation के questions maximum solve करो। मेक श्योर यूर सॉल्विंग एज मेनी क्वेश्चन, चाहे आप 9th का डेटा इंटरप्रिटेशन, 10th का डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, वट एवर क्वेश्चन यू कैन फाइंड ऑन डेटा इंटरप्रिटेशन। सो मैम कहाँ से फाइंड करेंगे? दिस इज वाई मैंने इनिशियली आपको बोला कि आई एम गिविंग यू 7 डेज स्ट्रैटेजी। तो इस 7 डेज स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी तुम्हारे पास 5 दिन है अभी। टुडे इज 1st of March, 13th of March को एग्जाम है, ठीक है। सो दैट इज समथिंग वी आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ यू, right? So do practice tough reading comprehension, spot the error questions highly expected in CUET, right? ये आपको प्रीवियस ईयर भी करने चाहिए, या फिर जितने भी मॉक्स आपने दिए हैं, आपने अभी तक 3 मॉक्स दे दिए हैं, उन मॉक्स में वट एवर क्वेश्चन यू कुड नॉट अटेम्प्ट, मेक श्योर यू आर री अटेम्प्टिंग देम। For your fundamental accounting, focus on high level accountancy concepts, ठीक है नैन्सी। यू कुड स्टिक टू द बेसिक वंस, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, बेसिक्स के ऊपर ही करो। 10 में से अगर बेटा 5 या 6 भी अचीव कर पाए एक्यूरेसी, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। और नैन्सी, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फंडामेंटल अकाउंटेंसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चन जो है वो उठाओ और उनको समझने की कोशिश करो। दैट इज दी बेयर मिनिमम चीज जो आप कर सकते हो अगर आपको अकाउंटेंसी समझ में नहीं आती है। लॉजिकल रीजनिंग के अगेन मेक श्योर यू आर डूइंग द सेक्शनल टेस्ट, यू आर अटेम्प्टिंग मिसलेनियस टाइप ऑफ रीजनिंग क्वेश्चंस, ठीक है। एंड मॉक्स को एनालाइज करो, कौन से क्वेश्चंस छूटे गलती से, कौन से क्वेश्चंस डेलिबरेटली छोड़े गए, और इनमें से कौन से क्वेश्चंस डुएबल थे। सो यू हैव टू एनालाइज दैट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या कोई ऐसा टॉपिक था जो बहुत ज्यादा वीक है अभी भी, ठीक है। सो यू कुड बी वर्किंग ऑन दैट। Re-attempt QA sections for the few best mock that you have taken so far. Guys, does that really matter कि आपको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी वाले ही प्रीवियस ईयर मॉक्स, सॉरी प्रीवियस मॉक्स देखने हैं? नो, इट्स ओके। आपका symbiosis, आपका नार्सी, ठीक है, all these entrance tests have the same level of QA/DI, so make sure you are working on that as well. Okay, so what is your concern about verbal? We're going to discuss that, and that is a very valid point. What do you think your problem is in verbal? So there are 3 sections, to be very honest. One is vocab, okay? The other one is reading comprehension. The third one is grammar. So what is your concern? Let's talk about it. ठीक है, take section wise test for grammar and reading comprehension on the 6th day. For journal awareness and current affairs, relearn all that you have in your notebook. जो भी तुम्हारे notes हैं, please go through them. Practice as many questions as you can. LR देखो, मैंने day 6, day 5, day 4 इन तीनों दिन में मैंने सिर्फ ये बोला है कि प्रैक्टिस करो एलआर को। अगर तुम अलग से प्रैक्टिस नहीं भी करना चाहते हो तो तुम्हारे पास जो भी सेक्शनल टेस्ट अवेलेबल है, मेक श्योर यू आर अटेम्प्टिंग देम। रिवाइज योर अकाउंटेंसी रूल बुक एंड टर्म्स, वट एवर यू हैव लर्न टिल नाउ, मेक श्योर यू आर रिवाइजिंग इट, ठीक है।
take one final mock test. Now, this is day 6. I won't be asking you to take any more mock test. Today is the final mock test. चाहे तुम्हारा mock test बहुत अच्छा गया, you're like, oh, I attempted 115 questions, मेरा accuracy बड़ा ही अच्छा है. Cool, stay calm. मैम आई कुड नॉट अटेम्प्ट, मुझे नहीं पता क्या हो गया, मैं मॉक अटेम्प्ट कर रहा था, मेरा स्ट्रैटेजी खराब हो गया, मेरा फोकस नहीं बन रहा था, आई वाज फीलिंग डिस्ट्रैक्टेड. ओके, स्टे काम. Trust the process that you have attempted, you have done whatever you could at this point of time, and there is nothing you can do to change about it. Okay, you have nothing that you can change about this process now, so stay calm. That is something which is expected out of you. Day 7 में just make sure you are just revising the complex formulas and rules. ठीक है, ट्रिग्नो रिवाइज कर सकते हो. You could be going back to your formula notebook and revising that. Remember the successful mock attempts and be confident. ठीक है, there's nothing more you can do about verbal ability on the day 7th, which is the last day, right? Journal awareness and current affairs. Do not try to keep on learning more things. That is more than sufficient. Day 7 में कुछ extra नहीं करना है. ठीक है, keep a clear head and keep your mind active. Now I am saying if you are a student जिसने day 6 में mock दिया, I'm not saying give a mock again. ठीक है, but if your mind is just focused on giving one more mock, just go ahead and do that. ठीक है, and then analyze the mock test taken so far. ठीक है, and understand that okay, this was a wise decision not attempting this question from coding decoding, although I could have attempted it, but this was a wise decision. So whatever decisions you have took in the mock test, be confident about them. Okay, and make sure you are keeping a very positive outlook. So now SRH, you were asking me about the verbal. See, I'm right now I'm assuming that your grammar is okay, because till this point of time आपने अपने school life में you have done plenty of grammar. ठीक है, and I'm assuming कि आपका reading comprehension जो है वो आप in next 10 days में practice कर लोगे. ठीक है, तो आपका आज 1st of March है, 13th of March को एग्जाम है, so there are 12 days. So I am giving you 7 days strategy. तो ये 5 days का जो buffer period है, यहाँ पे you can work on whatever is the weaker point. मैम मेरा QA weak है, work on it. मैम मैंने current affairs को हाथ भी नहीं लगाया, work on it. मैम मेरा fundamental accounting मैंने करा ही नहीं है, work on it. मैम मैंने आज तक एक भी RC को attempt ही नहीं करके देखा, तो ये 5 दिन में कम से कम 10 RC करो, एक दिन में 2 RCs करो. So make sure you do that. Okay, so what you can do is, this is a very valid point. Grammar में questions कहाँ से आ सकते हैं? They can ask you to improve sentences. So day 1 out of these 5 days आप क्या कर सकते हो? Sentence improvement के ऊपर focus कर सकते हो. ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो? पैरा जंबल के ऊपर फोकस कर सकते हो. तो आपका अगर ग्रामर वीक है, तो ये जो बफर पीरियड है, हर दिन आप अपने वर्बल एबिलिटी के ग्रामर को 2 आवर्स डेडिकेट कर सकते हो. लाइक मैम मेरा ग्रामर बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, फर्स्ट डे 2 आवर्स थोड़े से बेसिक लर्न करो, थोड़े से क्वेश्चन. मैम क्वेश्चंस कहाँ से करूं? देयर इज अ वेरी गुड बुक कॉल्ड रेन एंड मार्टिन. इफ यू हैव दैट विद यू, perfect, attempt that book. If you do not have that book, the bare minimum बच्चा that you can do is come to BYJU'S Exam Prep. वहां पे quizzes available है, 10 क्वेश्चंस का क्विज है बेस्ड ऑन ग्रामर, वोकैबुलरी. सो आके वो अटेम्प्ट करना शुरू करो. तो अपने आप को 2 आवर्स ईच डे दो इन 5 डेज में टू रिवाइज योर ग्रामर. ठीक है, सो दीज 5 days, सी आई एम टेलिंग यू दैट ओके, I am giving you a strategy which is based on 7 days, but I am asking everyone कि ये जो 5 days का buffer period है, this 5 days buffer period, please work on your weaknesses. That is very important. ठीक है? Hi Vishal, I'm doing good. Thank you so much for asking, and I really hope you're done and dusted with your preparation. So guys, what did we take out from this? We took out that in these 5 days तुम्हारे पास तुम्हारे सारे के सारे फॉर्मूला एक नोटबुक में होने चाहिए मैथ्स के.
तुम्हारा लॉजिकल रीजनिंग का जो भी वीकर सेक्शन है तुम उसके ऊपर काम करोगे। तुम्हारा वर्बल एबिलिटी, राइट, चाहे वो ग्रामर है, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, चाहे वो वोकैबुलरी है, यू गोइंग टू वर्क ऑन दैट। यू गोइंग टू रिवाइज व्हाट एवर पॉसिबल फ्रॉम करंट अफेयर्स इन दीज 5 days। यू आर गोइंग टू मेक श्योर दैट आप क्या कर रहे हो, डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए अलग से काम कर रहे हो। अपनी फंडामेंटल अकाउंटिंग अगर आपने अभी तक शुरू नहीं करी है, यू वर्किंग ऑन दैट। सो दीज 5 days अगर आप 6 hours ईच डे लेकर आ रहे हो, सो यू आर गेटिंग 30 hours। So in these 30 hours, make sure you're utilizing them at maximum। जो भी सबसे कम है उसके ऊपर काम करो। So 30 hours मिनिमम निकाले जा सकते हैं, given the fact that you are eliminating whatever distractions you have your way। So the examination day plan, उसी दिन सोते नहीं रहना है। Get a good sleep before the exam day। 7th day तक तुम जो भी कर सकते थे, you have done it। ठीक है, अब चेंज नहीं हो सकता है कुछ। एंड टेल योर सेल्फ दैट दिस इज नॉट द लास्ट अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम एंड इट्स परफेक्टली फाइन। ठीक है, आपको पता चलेगा यहाँ पे कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स करी है, यू गोइंग टू लर्न आउट ऑफ यू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट, राइट। सो लर्निंग बहुत बड़ी चीज है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि वहां पे जाके बोलो ओ मुझसे अच्छा नहीं हो रहा एग्जाम में, अप्रैल में दूंगा। डोंट डू दैट, यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर चांस। ठीक है, मेक श्योर यू आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर अटेम्प्ट। 120 मिनट्स है, 120 क्वेश्चंस है, 120 तो कर भी नहीं सकते, तुम 100 भी अच्छे से कराए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एंड ईट वेल, प्लीज स्टे हाइड्रेटेड। आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स सर दर्द की वजह से परेशान हो जाते हैं ऑन द एग्जामिनेशन डे, क्योंकि पिछले 4-5 दिन में तुमने पानी नहीं पिया। स्टे हाइड्रेटेड प्लीज। डोंट ईट समथिंग दैट कैन पोटेंशियली मेक यू इल। नाउ दैट क्रेविंग ऑफ छोले भटूरे इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। प्लीज इसको नहीं करना है अभी, थोड़े से दिन शांति से रह लो, बीमार मत पड़ना। कीप डिस्ट्रैक्शंस अवे, स्पेशली सोशल मीडिया, इट्स परफेक्टली फाइन। फेसबुक कहीं नहीं जा रही, फेसबुक चलाता भी कौन है वैसे, इंस्टाग्राम कहीं नहीं जा रहा, तुम्हारा नेटफ्लिक्स का अकाउंट तुम्हारे 10 दिन में खत्म नहीं होने वाला है। यू कैन ऑलवेज कम बैक एंड बिंज वॉच थिंग्स। ठीक है, दैट आई विल नॉट रिकमेंड, क्योंकि 2 दिन के बाद तुम्हारा इंटरव्यू होने वाला है, बट एनीवेज, राइट। सो यू कैन ऑलवेज वॉच दैट लेटर ऑन। मेक श्योर यू कीप रेडी ऑल द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, चेक देम थ्राइस। खुद चेक करो, मम्मी से चेक करो, बाकी 2 टाइम उनको लिस्ट दो, मम्मी से चेक करो प्लीज। मम्मी या पापा को बोलो, दादा दादी को बोलो कि भाई ये कर दो चेक। इफ यू हैव अ एल्डर सिस्टर और यंगर सिस्टर, प्लीज आस्क हर टू डू इट। ठीक है, तो अब सिर्फ खुद पे डिपेंडेंट मत रहो, स्टे काम्ड एंड रिलैक्स्ड। ठीक है, SRH बचा, last 5 months are most crucial, yes they are very important, but अगर आपके last 5 months के हो चुके हैं, तो अप्रैल 2021, लाइक अप्रैल 2021 4 हफ्ते हैं, 4 हफ्तों में क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ, 1 अप्रैल को क्या हुआ, 2 को क्या हुआ, 3 को क्या हुआ। तुम्हारे पास 31 डेज है हर मंथ में, तो आधा आधा घंटा डेडिकेट करते रहो, वट एवर इंपॉर्टेंट इज देयर कीप ऑन नोटिंग इन दिस नेक्स्ट 5 days। मेक श्योर यू आर डूइंग दैट। ठीक है, नहीं तो पकड़ो यार, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को पकड़ लो, साथ में बिठा लो, उसको बोलो कि मैं पढ़ रहा हूँ तो तुम्हें भी पढ़ना पड़ेगा। अपने सिस्टर को बिठा लो, भाई को बिठा लो, मम्मा पापा, वट एवर पर्सन इज अवेलेबल, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें जो भी चीज हेल्प करती है, जस्ट डू इट। ठीक है, सो यू कुड गो डे वाइज। ठीक है, मुझे फर्स्ट डे के बारे में देखना है। ठीक है, ओके, 1 अप्रैल को 2 ही चीजें हुई थी, राइट देम डाउन, 5 minutes ओवर, गो टू द सेकेंड डे, गो टू द। तो आप एक पर्टिकुलर मंथ को अगर आप 40 to 45 मिनट्स देते जा रहे हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। सुबह हुई अप्रैल 2021 से शुरू करा, दोपहर को मई 2021 एंड देन सो ऑन। सो व्हेन यू हैव दीज नोट्स, तो ये जो 7 डे प्लान मैंने दिया है, इस 7 डे प्लान के अंदर आई एम आस्किंग यू टू रिवाइज देम एज वेल। ठीक है, आदित, काश 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 मेरा सच में मन कर रहा है कि काश मैं एनटीए में होती, मैं तुम लोगों को अपडेट दे देती, बट अभी तक कोई अपडेट नहीं है। ट्रस्ट मी, आई विल बी द फर्स्ट वन टू जंप इन एंड टेल यू कि क्या अपडेट है। आई रियली होप उस दिन मैं बीमार नहीं पड़ जाऊं, बट देर इज स्टिल नो अपडेट अबाउट इट। सो ऑल द बेस्ट गाइज, आई होप दिस वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू, आई होप आई आंसर्ड ऑल योर क्वेरीज। बाय द वे, आप अपने नेक्स्ट कुछ दिन में
सालिक सर के साथ जर्नल अवेयरनेस के फ्री सेशंस में जाके प्रैक्टिस कर सकते हो 2 p.m. ठीक है. आई एम ऑल्सो गिविंग यू questions, practice questions for logical reasoning, so make sure you're practicing that. ठीक है. अल्पा मैम के साथ क्रिटिकल रीजनिंग, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर सकते हो. मेक श्योर यू डू दैट. ठीक है. अंकुर तोमार सर के साथ आप 11 AM क्वांटिटेटिव एबिलिटी की प्रैक्टिस कर सकते हो. तो आप वो भी आपके पास एक ऑप्शन है इफ यू आर अ स्टूडेंट हु हैज प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग थिंग्स ऑन देयर ओन. यस, यस सोनाली. सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, सो वट एवर courses you see, I'm there teaching logical reasoning, right? I am there, Rabia ma'am is there, Salik sir is there, Vinod sir is there, Ankur Tomar sir is there, Alpa ma'am is there, Neha ma'am is there. ठीक है, we're all teaching you all the things. तो आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे जाओ. तो स्कोर बूस्टर कोर्स है, बीबीए रैंकर्स कोर्स है, सीयूसीटी चैंपियंस कोर्स है. सो ऑल दीज थिंग्स वेयर आई एम टीचिंग लॉजिकल रीजनिंग, एंड यूट्यूब के ऊपर भी आई एम गिविंग यू लॉजिकल रीजनिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस. आप जा सकते हो. ठीक है, वहां पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे जाके चेक कर सकते हो. हाँ बच्चा, मैं वही वही बता रही हूँ. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. आप वहां पे चेक कर सकते हो जाके. ठीक है. अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है. ठीक है. एंड एट 4 p.m. बायजूस एग्जाम प्रेप के ऊपर आई एम ऑल्सो आस्किंग यू गाइज टू प्रैक्टिस लॉजिकल रीजनिंग एज वेल. ठीक है, तो आप वहां पे भी आके प्रैक्टिस कर सकते हो. और कुछ और क्वेश्चंस भी पूछने, फील फ्री टू डू दैट. इतना स्ट्रेस नहीं लेने का. ठीक है. एनीथिंग एल्स दैट आई कैन हेल्प यू विद? आई होप दैट्स ऑल. एंड अभी के लिए प्लीज भगवान का वास्ता है, तुम लोगों ने जिन्होंने फंडामेंटल अकाउंटिंग शुरू भी नहीं करी है अभी, यू आर ऑन इंटरनेट, प्लीज गो ऑन एनसीईआरटी का वेबसाइट एंड एटलीस्ट इंडेक्स ओपन करो 11th एंड 12th का. मेक श्योर यू डू दैट. ठीक है. एंड आई एम गोइंग टू मीट यू गाइज एट 4 p.m. टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप प्रैक्टिसिंग. डू नॉट स्ट्रेस आउट. और भी चांसेस हैं, बट वी आर गोइंग टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस वन. बाय एवरीवन, टेक केयर.